Good morning, students. Welcome to this live virtual classes for the paper 4, that is business economics. Till now, we had covered 3 units, uh, basically starting with the whole concept of business economics. What is business economics? The basic fundamental of demand and supply, then elasticity, production, and cost. Now, in the fourth unit that today we are starting with, that is determination of uh, market structure and price and output determination. It is one of the most important and significant part of your syllabus. And today we are having Dr. Jatin Kumar Lamba, who will be taking up the classes uh, for this particular unit, and he's a very experienced faculty. I think most of you will be enjoying the way he teaches the subject, and he'll be handling all the queries that has been posted. Now, second thing that from the very beginning that we are reminding you that be regular in the classes. What we are teaching in this class, try to revise all these things and make your own notes. Preferably, the faculty who will be teaching is having his PowerPoint presentation or some notes that will be uploaded. Now, apart from that, the course curriculum, the course material that we are been giving that has been given to you is the most appropriate. And believe me that if you have read the whole course module till the last unit, then definitely your chances of qualifying the foundation examination, particularly this in paper number 4, is almost certain, because mostly the questions that has been coming in the examinations are from the study material only. Only thing is that you need to be patient, and don't worry about too many materials that has been available in the market. So we are basically telling you, or we are basically teaching you from our study module only. Apart from that, at the end, some practice questions will be uploaded, and you can practice it, because generally it's a numerical, this is objective based paper. So definitely for any questions, 4 options will be there, and accordingly you have to choose the right one. Now, I'm not taking much time, and I'm just hopeful that uh, Dr. Lamba will be giving his best to the topic that has been assigned to him. And so over to you, Dr. Lamba, for taking the class forward. Thank you, sir. Thank you so much. So, good morning, everyone. Today we are going to start with the fourth chapter uh, of paper 4 business economics, and that is the market structure and price output determination. So, first of all, uh, we must know what is the meaning of market, right? So, students, in general terms, we use the market uh, for a particular place or places, right? Where different goods and services are being sold and purchased, right? But for example, Connaught Place is a market, and Chandni Chowk is a market, Palika Bazaar. So, all these places where different types of goods and services are being sold are generally termed as a market, right? But in economics, the term market refers more than a particular location, right? First of all, you must know in economics, the market refers to a particular product, right? Market यहाँ पर एक particular product के लिए है, not for a particular place or different places, right? So when we are saying here it is a perfect competition market, then that particular form of market is for particular product, right? Not for all products.
So in economics, the market refers to all those places where a particular product is being sold and purchased, right? So as per the meaning here on the screen, in economics, the term market refers to much more than physical location with stalls and vendors. है ना? It is, in general term, it is market. But in economics, it is more than that. It is a common framework where buyer and seller interact to each other for exchange of goods and services and information, right? So now at the time of digital market and digital era, right? E-commerce in the era of e-commerce, not a particular physical place. Market is not restricted to a physical locations or places, right? So in e-commerce, the e-commerce website are also a part of that framework, right? So where different goods and services are being exchanged, right? So there must be buyer and seller. So I am in next slide. I am going to share the basic essentials of the market. So all these essentials also include the buyer and seller and interaction between buyer and seller, and that interaction in old age in old time, the transaction or interaction was when the buyer go to the shop, है ना, and in the market or door to door sale to seller, then there will be interaction. But now the interaction between buyer and seller on online platform also. So that Amazon, Flipkart, these are also the platforms for the interaction between the buyer and seller. So this is the meaning definition you are getting on the screen. In economics, the term market refers to much more than physical location with stall and vendors. It is not restricted to that. It is a common framework where buyer and seller interact to exchange goods and services and also information, right? At its core, market is the mechanism that determine the price of a commodity. Now, this is very important. Mark my word, students. Ki market is a mechanism, right? Where the price of the commodity and the quantity of the commodity that are being produced and consumed are determined. Now, how the price is determined, right? How the price is determined. So, first of all, I would like to say, if I am asking any question, it will be more attractive and interactive session if you reply for those questions on the chat box or है ना? So in a mechanism, the price of the commodity and quantity of the commodity or product is determined. Now, how this price and quantity determined, you have already learned it in demand and supply unit or consumer behavior unit, right? So it is determined on the basis of market demand and market supply, right? So yes, the main core of the market is to determine the equilibrium price and equilibrium quantity where the market demand and market supply equates, right? So where market demand is equal to market supply, that is the equilibrium point, and where there the price being set and quantity, that is equilibrium price and quantity. Now move to the next slide, essential elements of the market. So these are the essential elements showing on your screen are the essential elements of the market in economic terms, right? First of all, buyer and seller, right? Buyer, those one who are going to purchase. Seller, those one who are going to sell the product. Second one is product or service. Here you must understand and you must have in your mind that we are not talking about the market for a physical item or visible item or physical item like goods, tangible items. When we are saying about we are discussing about the market may be for the visible goods or items, or it may be for the services which are intangible or invisible, right?
So market is for both product and services. So there must be a product or service for which the buyer and sellers are interacting. Then the bargaining for a price. यहाँ पर एक पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है. So you must all understand for the price, right? Price, what is price? So when we are talking about price in economics, there are two types of values of a product. Student, it is very important from the point of view of exam. So when we are talking about the price, what is the meaning of price here? So price means exchange value. Mark my words and note it down. Exchange value or economic value of a product. Economic value of a प्रोडक्ट, राइट. सो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों, है ना. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सचेंज वैल्यू एंड इकोनॉमिक वैल्यू. एंड आई विल ऑल्सो discuss few questions, few MCQs after the class, right? When the all these session will be for today completed, and there I will also discuss this type of question, how the question is framed. So first of all, exchange value or economic value means price, right? And you know, price is the amount which a buyer is ready to pay and seller is ready to accept it, है ना. So, what is the meaning of exchange value? So, exchange value or economic value is in a monetary term, it may be in barter system, it may be goods in exchange of goods. That is also price. And price means something in return, consideration, right? But, sir, exchange value के अलावा भी कुछ होता है तो yes. So, there are two types of value. One is exchange value and other is वैल्यू इन यूज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, दीज टू कंसेप्ट. वैल्यू इन यूज in economics, basically both terms are used, both values are important. Use value in use and value in exchange, or exchange value. But in market, mark my word, students, when we are talking about the market, in market we use only exchange value. We use only exchange value, right? Because market में जब बायर्स गुड्स एंड सर्विसेज आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, सो देयर मस्ट बी अ वैल्यू इन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, और इन टर्म्स बार्टर सिस्टम इट मे बी द गुड्स इन रिटर्न ऑफ गुड्स, right? But what is the value of in use and how it is important in economics, not in market, right? Please mark my word, not in market. Market may only we use exchange value, right? We have a use of exchange value. But whenever we are talking about the market इकोनॉमिक्स, देयर इज also वैल्यू इन यूज. अब ये वैल्यू इन यूज कहाँ यूज होता है, तो बच्चों एक बार ध्यान रखना. You have already covered the topic of consumer behavior, where utility, total utility, marginal utility, and all these है ना concepts you have learned about. So in that case, what is the value in use? When you use the term marginal utility, what the buyer is ready to pay, right? Consumer is ready to pay, spend money, ready to pay, willing to pay, what he is willing to pay, and a maximum price, what he is willing to pay, not actually pays. Actually, तो जो price होगा वही pay करेगा, and that particular price is the exchange value or economic value, right? But marginal utility basically determined by on the basis of value in use, means how the product is, how much the product is useful for you, useful for the buyer, right? So, is it clear to all? So, now, तो वैल्यू इन यूज, तो ध्यान रहेगा बच्चों कि इन केस ऑफ मार्केट, मार्केट के केस में आप क्या देखेंगे, ओनली एक्सचेंज वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू in terms of money or in terms of goods and services. Now, the next thing is knowledge about market conditions. This is also an essential element. There must be a knowledge about the market condition, right? So, what is the market condition? What is the price? What is the need of consumer?
All these are the market conditions. How many competitors are available? What are the prices of different goods available? Competitive goods available in the market. All such kind of market condition knowledge. Knowledge to whom? To both, to the buyer and seller. राइट, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन टू whom? Only to the buyer, only to the seller, or both? To both, because market is incomplete without buyer and seller, right? We cannot say only buyer, yeah, only demand is important for the market, or only seller, only supply is important. Both are equally important. ठीक है? So knowledge about market condition to both buyer and seller. One price for the product or service at a given time, है ना? On that price the buyer is willing to buy and seller is willing to sell, right? So now these are the essential elements. So till now we have explained the meaning of, I have explained the meaning of the market and the essential elements of the market, right? Let us move to the next slide. So classification of market, right? Classification of market. See, here we have classified the market on the different bases, on the different criteria. So these are the bases of the classification. First one is geographical area. On the basis of geographical area, right? For example, local. So there are four classification on the basis of geographical area, and इनको हम फटाफट से देखेंगे क्योंकि we have mainly the focus on the competition basis, that is perfect competition and imperfect. But still, the question may be asked on this. So the classification on the geographical area, it may be a local market, it may be a regional or state market, it may be a national market, international market. There are four types of categories under geographical, on the basis of geographical area. Now, which types of goods are there? In local market, perishable goods or bulky items sold nearby area, right? So perishable goods are which have the short duration of time, right? These are the perishable goods, right? So perishable goods are these. See, तो perishable goods like milk, vegetable, है ना, short duration of time, जल्दी खराब हो जाती हैं जो goods, है ना, spoil हो जाती हैं. All these goods are perishable goods, right? So और द बल्की आइटम्स सोल्ड इन नियर बाय एरिया, राइट? तो जो हम अपने लोकल मार्केट से खरीदेंगे, आसपास से, है ना, ये आ जाएंगे. रीजनल और स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक रीजन और स्टेट. देयर आर सम goods or services which are provided to a particular region only, है ना. They are restricted, they have no approach to the other states, and all these are the. And national means all over India, all over country, goods traded across the entire country, national brands. And international is international brands, global trade goods of services like gold, oil, software, right? So we are importing and exporting all these are international market. Second one is time period. On time period basis, very short run. Students, mark my word and note it down. This is very important for the exams point of view. Very short run period. It is generally being asked in the exam. Very short run period. Which, no, what do you understand by the very short run period? So the very short run period is the period where supply is fixed. Supply cannot be increased, right? So where the supply cannot be increased, instead of rising prices, you have already learned about law of demand, law of supply, right? So in law of supply, uh, you have read that supply is directly related to the price, right? As the price goes up, the supply will rise. But in very short run period, if there is a market on the basis of very short run period, then the supply is fixed, even if the prices are rising.
prices are high, the supply cannot be raised, right? So supply is fixed, or you can say supply is perfectly inelastic in that type of market. Mark my word, student, note it down. Very short run period where supply is fixed. Options क्या हो सकते हैं MCQ में? Supply is fixed or supply is perfectly inelastic. You know the meaning of perfectly inelastic, na? Perfectly inelastic, where supply cannot be changed even with the change in price. It may be daily fish market, right? In case of daily fish markets, because uh, it depends on the nature, right? So if the prices are high, the supplier cannot raise the supply of the fish, because they are not manufacturing the fish. It is not in their hand, right? So whatever they catch from the water bodies or oceans, they are being supplied. So it is the very short run period where supply is fixed. Short run period where supply can be adjusted slightly by change the variable input. In your third unit in your third unit, production and cost, you have already learned about variable inputs and fixed inputs, right? Variable factors, fixed factors. So short run period, the supply can be altered only with the change in variable input, not fixed factors or fixed inputs, right? So in short run, fixed factors remain fixed, only the variable input, say labor, raw material, can be changed to change the supply, right? In long run period, all factors of production are become variable, right? In long run period, all factors of production become variable. So the scale of production can be expanded, right? You have already learned about that. The scale of production can be expanded. So that is the long run period. So here we have discussed the market on the basis of geographical area, different types of market, and on the basis of time period. Now, what is the next base of classification? So we will move ahead. So on the basis of regulations. So on the basis of regulations, there are, sorry, nature of transaction first, sorry. Nature of transaction, there is a spot or cash market and future market. There are two classifications on the basis of nature of transaction. So what is the cash or spot market? At the name suggests transactions where goods and money are exchanged immediately, right? You have pay money and the seller provide you goods, right? So generally, that is the market. Generally, we go to the shop, we pay the price and buy the stationery or clothes, whatever the daily needs, and come back to the home. That is the spot market or cash market. Now, what is future market? So, future market, at the name suggests, contracts to buy or sell at a specified price on a future date, right? You have a contract with the seller. There is a contract between buyer and seller, that the seller will provide that particular quantity or product in any future date, this pre-decided future date, on a specific price which have already decided in the contract, right? For example, in manufacturing also, that you have placed an order, right? You have placed an order for the furniture of your house, which is being under construction, right? So uh, and a customized, you have ordered a customized furniture for according to the place. So already you have decided the price of that product, right? But the product is being delivered after a certain time on a specific date when the construction will be completed. So that is the future market, where you will pay, goods will be delivered to you on a future date at a particular fixed price, right? Now, then second one is regulation. On the basis of regulation, there are regulated market, unregulated market. At the name suggests, regulated market means where there is a regulatory authority or regulatory body. For example, stock exchange market, right? For example, stock exchange market, where different types of securities, shares, bonds, debentures are being traded, right? That is controlled, that is regulated by the SEBI. है ना? Who is the regulatory body there? SEBI, Security Exchange Board of India, right? So
Right. So first of all, just a minute, student. Hmm. So regulated body, which is governed, which is regulated by any regulatory authority. There may be some other examples of regulated bodies, sir. Yes. Some other examples. For example, TRAI. TRAI is a Telecom Regulatory Authority of India. So all the telecom services you are being used, right? You are using that is whether it may be a Vodafone or a Geo or that. So all those telecom services being provided by the telecom suppliers and companies. So all these companies or this market, particular telecom market, is being regulated by the TRAI, TRAI, Telecom Regulatory Authority of India. That is the regulatory market. Then unregulated market, these are known as a free market. No specific restrictions on transaction. These are free market, unregulated market. For example, the local products being sold in the market, all these are, and even on the basis in fruits vegetable markets you go to in where there are agriculture anaj mandi वगैरह, so they are regulated है ना, where the commission and prices are being regulated by all. But the local mandis around your house, as per nearby your area, है ना, the mandis, these are unregulated. Whatever the prices are being charged, है ना, आप कहीं भी अनियन एक से पूछते हैं, is selling at 30 rupees, other one is selling at 35 rupees per kg, right? So that is unregulated market. Now, volume business, every one of you is aware about that, wholesale and retail market, right? Wholesale market where we buy in a bulk, in a large amount, है ना? So goods traded in large quantity, usually between producer and retailer. So basically, wholesale market works between the producer and seller, where the retailer, where retailers give the bulk order to the producer and producer provide the same. And the retail market where goods are being sold in a small quantities directly to the end consumers, right? So this is the retail market. Now the last and very important classification, which is mainly the part of our syllabus, is on the basis of type of competition. So on the basis of type of competition, there are two categories of the market. One is perfect and other is imperfect competition. सो इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अभी तो इसको डिस्क्रिप्शन में हमने इन वेरी शॉर्ट टर्म्स वी हैव डिसाइडेड, वी हैव डिस्क्राइबिंग हियर मेनी बायर्स एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, नो प्राइस कंट्रोल. दीज आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, राइट? एंड you all have learned about this in your class 11 इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? एंड अभी भी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो परफेक्ट कंपटीशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर selling the homogeneous product with at a uniform price, right? Where no price control means the single buyer or seller has no control over the price, right? That is the meaning of control. है ना? No control, no price control means not a single seller or buyer can influence the price. Price is determined by the industry, by the market, and all should must have to buy or sell the product at a particular uniform price. Then imperfect market, perfect competition के अलावा monopolies, oligopoly, right? And monopolistic competition, right? All these are the imperfect form of market. Where imperfect in which sense, एक तो यहाँ homogeneous product नहीं है, price कंट्रोल कर रहा है सेलर, है ना? मोनोपोली में तो मोनोपोली हैज अ सिंगल सेलर मोनोपोली हैज अ होल कंट्रोल ओवर द प्राइस, राइट? सो दीज आर इम्परफेक्ट इन दैट टाइप. नाउ in detail we will discuss all these features and their implications, right? So these are the classification. So the next topic we have covered so far is the classification of market on the different basis, right? Now we are moving ahead. You have already learned in your third unit about the production and cost,
right? You are all aware about the different types of cost in short run, right? That is total cost, average cost, fixed cost, yes or no, right? And the total cost, right? So the total cost is the sum of the total fixed cost, total variable cost, right? So total fixed cost and total variable cost. And then average cost, that is also the part of average fixed cost and average variable cost, then marginal cost. You have all learned about it. And why I'm revising it here? Because while determining the equilibrium of a particular firm in different kind of market, perfect monopoly, monopolistic competition, you must have the knowledge about both cost and revenue, right? Because market works on cost and revenue. The profit of the seller is determined by the difference between total cost and total revenue and total cost, right? You all know about that. Profit is the difference between revenue and cost. So we have learned about the cost. Now we are going here to discuss about the revenues. And the revenue, what is the meaning of revenue here? So first of all, you must be aware about that. You must have the knowledge about that. Ki revenue and cost and profit are two different things, right? Revenue and profit are not same thing, right? So what is the revenue? Revenue is the sale price, yeah, amount collected on sale, right? Then what is profit? Profit is difference between revenue and cost. Revenue minus cost is equal to profit. So profit is different thing, right? For example, if I am selling a particular product, one unit of particular product at rupees 100, right? So I sold that product to a buyer. Buyer gives me rupees 100. That 100 rupees is a revenue, right? Now that product of 100 rupees I have purchased from the wholesaler, yeah, the retailer at rupees 80, right? And 20 rupees, and I sold it on rupees 100. Then the 20 rupees of margin I have earned, that is the profit, right? So revenue minus cost is the profit. So first of all, mark my words, note it down, students, that revenue and profit are two different things, right? They are separate. So revenue is the total amount the firm, the seller realizes from the buyer, right? And profit is the revenue excluding the cost. After deducting the cost from the revenue, we get the profit. That is the income. The income of the seller, that is the net income. So net income is a profit, right? So let us move ahead. So total revenue. So total revenue. So there are three types of revenues. One is total revenue, other is average revenue, and the third one is marginal revenue. Clear? So total revenue. As the name suggests, total revenue is the amount of money which a firm realizes by selling the certain units of a commodity, right? Certain units of a commodity. It means if the seller is selling 20 units of a commodity at the rate of rupees 50 each, right? Per unit rupees 50 and units are 20, then the total revenue will be 20 into 50. That will be 1000 will be the total revenue. So total revenue is the total cash, total amount of money which seller or firm realizes by selling a certain quantity, certain units of a commodity, right? Symbolically अगर हम देखें तो total revenue का ये formula होता है total revenue TR is equal to P into Q, where P is the price per unit, and Q is the quantity of commodity being sold. So I have already given the example. Price per unit is 50 and total quantity sold 20.
then 50 into 20, that is 1000 is the total revenue, right? So this is the total revenue. Now, move to the next, that is average revenue. What is average revenue? So average means per unit, right? So it is the per unit revenue that you have already learned in cost also, average cost. So average cost is per unit cost now. So average revenue is the per unit revenue. So average revenue is the revenue earned per unit of output. It is nothing but price. ये यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. मार्क माय वर्ड्स, नोट इट डाउन कि average revenue is always equal to price. So in MCQs form of questions, the pattern of you all know that the paper 4, that is business economics, is on MCQ pattern, right? So it is objective basis पे MCQ pattern पे है. तो in MCQ this question is generally being asked कि what is the where average revenue is equal to what, right? So ये question exam में आता है. Average revenue is same or equals to, option दिया है equals to average cost or price or that quantity. तो ध्यान रहे, average revenue and price is the same thing. एक तो ये याद रखना है. And the other thing you must know, you must note it down, that is average revenue curve. When we will discuss about the graph or curve, so average revenue, so two things you must note it down. Yeah, note it. One is average revenue is equal to price always. Always means it may any type of market and any seller, for perfect competition, for monopoly, for monopolistic, right? AR is always equal to price. Then second thing is AR curve. AR curve of a firm or seller is its डिमांड कर्व. इसको इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है कि AR कर्व इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज AR कर्व. ऑप्शंस दिए हैं, डिमांड कर्व, MR कर्व और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन, और सप्लाई कर्व, राइट, और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ऐसे दिए होंगे ऑप्शन. तो यू मस्ट टिक ऑन द डिमांड कर्व, right? So AR curve is just same as the demand curve, right? Because it is equal to price. AR is always equal to price. Now see, तो सिंबॉलिकली अगर हम देखेंगे तो इट इज द पर यूनिट प्राइस, बिकॉज प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू पर यूनिट. सिंबॉलिकली AR कैसे डिराइव होता है, तो AR का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पर. AR इज इक्वल टू TR टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड, TR टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ AR. सो AR कैसे डिराइव होगा बच्चों, TR यानी टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. नाउ हाउ AR इज इक्वल टू प्राइस, सी टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा है. वी हैव सीन ऑन द लास्ट स्लाइड, टीआर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड. क्यू कैंसल्ड आउट, देन AR इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस. आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सो AR is always equal to price. Now the third one is MR, that is marginal revenue. So what is marginal revenue? So marginal means additional, right? Marginal means additional. So marginal revenue means the change in total revenue resulting from the sale of one additional unit, an additional unit of the commodity, right? Sale on an additional unit of a commodity. So whenever a seller sell one additional unit of a commodity, one additional unit of the commodity, the extra amount, the extra revenue he generates
will be the marginal revenue, right? So यहाँ लिखा भी है marginal revenue is the change in total revenue resulting from the sale of an additional unit of the commodity. So formula क्या है इसका? TR is equal to delta MR is equal to delta TR upon में delta Q. You all know what is the meaning of delta here. This sign of triangle delta. Delta stands for change. So change in total revenue divided by change in quantity. So marginal revenue is the रेशियो ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जब एमसीक्यू में आता है तो इट मे बी डिस्क्राइब इन एनी वे, सो इट मे बी द रेशियो, है ना, ये भी हो सकता है कि रेशियो ऑफ change in total revenue to the change in quantity sold, right? So this is the formula. And another formula for 1 unit change, if there is 1 unit change, for example, if it is given that quantity is being sold 1, 2, 3, 4, and total revenue is given for first unit, the total revenue is 10. For second unit, total revenue is say 24. For third unit, है ना, और it may be whatever 10, 20 ऐसे भी ले सकते हैं, ये मार्केट पे डिपेंड करता है, 30, 40 कुछ भी, राइट, या 30. सो व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू हियर? तो फॉर 1 unit, देखो यहाँ पर जो क्वांटिटी चेंज हो रही है दैट इज चेंजिंग एट द 1 additional unit. So here we can use this formula also, TRN minus TRN minus 1. TRN minus TRN minus 1. See, first one is same, TRN MR at first unit. Note it down. ये भी पूछ सकते हैं कि at which unit TRN MR और even AR भी equal होता है. AR is also 10 here. So at first unit TR or MR same रहेगा, even AR भी same रहेगा. After that, because this is I have taken the example of perfect competition where price remains constant, तो ये है. Imperfect में जाएंगे तो MR fall करेगा, वो मैं आगे discuss करूंगा. So here we can use for 2 unit TRN. What is TRN here? For 2 unit TRN is 20. Then TRN minus 1 means TR of the preceding unit, that is 10. 20 minus 10, that is MR is also 10. Then 30 minus 20, 10. Then 40 minus 30, also 10. ठीक. So TRN minus 1, preceding one minus करेंगे. Or we can also use delta. Delta TR here is 10 and delta quantity is 1. 10 divided by 1, 10. Here also delta TR is 10 divided by 1, that is also 10. So both can give the same result for 1 additional unit for each unit. But if there is this example is ki total quantity sold 10 and total revenue collected 150, at total quantity sold 15, total revenue collected 225. Now student, अब इसको बहुत ध्यान से देखेंगे बिकॉज यहीं पर कंफ्यूजन होगी. यहां पर जब 1 unit का चेंज नहीं है, here is not the change, quantity is changing by single unit. 10 के बाद 11 नहीं है, there is not 10 11 after 10, है ना. There is a gap of 5 units. There is a gap of 5 units, means more than 1 unit. Whenever there is the difference between more than 1 unit, then this formula will not work. This formula will not work. Then only this formula will work. So we can say for practical questions, we always use this formula, whether there is a gap of 1 unit or more than 1 unit. This will give the accurate result in both conditions, right? But whenever the single unit is changing, then this one can also be used. So formulas are two here: delta TR upon delta Q and TRN minus TRN minus 1. But whenever the units gap is more than 1, only delta formula will result. Because क्या confusion होगी, अगर ऐसा question आता है, then he will ask what is the marginal revenue of 15th unit, और options दिए होंगे वहां पर. There will be 4 options in MCQ, and one of the option is 225 minus 150, that is 75. So one option is also given 75 rupees. That 75 अगर किसी ने टिक कर दिया, that will be, है ना, तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, राइट, 0.25 की. सो ध्यान रहे, here the formula will be delta. So what is the gap between 150 to 25? 75. And what is the delta Q here? That is 5.
75 divided by 5, that is 15. So 15 rupees margin revenue for fifth unit, 15th unit, margin revenue 15 rupees. That is the accurate, correct answer. Is it clear? Right? See. So that is marginal revenue. So we have discussed the three concepts of revenue also. That is total revenue, average revenue, and marginal revenue. Now, this is again very important concept, students. इसको समझेंगे, बहुत ही important concept है ये कि the relationship between marginal revenue, average revenue, and elasticity of demand. All of you have already uh, covered that topic, elasticity of demand. Yes or no? Right? So elasticity of demand, you have already covered. So now how the marginal utility depends on the elasticity of demand. This is the formula, and what kind of questions can be asked in the exam in the form of MCQ on this particular topic I am going to discuss here. तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही important concept है, most important concept है, right? आप that is most important concept, right? So margin revenue, first of all you must learn about this formula. ये formula आपको बिल्कुल tips पे होना चाहिए. MR means marginal revenue. Marginal revenue is equal to AR. But इस AR की जगह पर और क्या हो सकता है बच्चों? I have already discussed you कि AR is always equal to price. So हो सकता है कि एग्जाम में वो आपसे फॉर्मूला ही पूछ ले, है ना? व्हाट इज द रिलेशनशिप फॉर्मूला बिटवीन एमआर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ मार्जिनल रेवेन्यू इज रिलेटेड टू द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फॉर्मूला दिया है नीचे. तो फॉर्मूले में ए आर की जगह पी भी हो सकता है, प्राइस. तो दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज ए आर इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस. इज इट क्लियर? राइट. सो एम आर इज इक्वल टू ए आर और प्राइस इंटू ई माइनस वन अपॉन ई. ई माइनस वन अपॉन ई. एक चीज और बता रहा हूं, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, एम आर इज इक्वल टू ए आर और प्राइस इज इक्वल टू वन माइनस वन बाय ई. इज इट क्लियर? सो मुझे बताएं, दिस एंड दिस पार्ट इज सेम और नॉट सेम? बिकॉज if we take the LCM, that is E, then it will become E minus 1 by E, right? So it can also be write as this. So AR into yani price into E minus 1 by E. So on the basis of this, there are three conclusion are here. First, if E yani elasticity of demand, all of you know about the elasticity of demand ki range kya hoti hai? What is the range of elasticity of demand? 0 to infinity. Yes or no? 0 to infinity. So if the elasticity of demand is 0, for example, elasticity of demand is 0 और infinity, तो वो तो extreme हो गए. बट इसके बीच में अगर हम देखें तो जो मिड पॉइंट होता है, elasticity of demand is equal to 1 unit elastic, right? So unit elastic पे अगर हम देखेंगे E is equal to 1, then at this formula 1 minus 1 divided by 1, that is 0. Then it means whatever the price, for example हम ऐसे ले लेते हैं, for example AR यानी price is 10, right? Then the formula is E minus 10 into E minus 1 by E. For example, E is 1, yani unit elastic demand. Then 10 into 1 minus 1, 0 divided by 1. 10 into 0 is equal to 0. Then marginal revenue is 0. So ये याद रहेंगे, 3 पॉइंट याद रखने हैं हमने कि marginal revenue will be 0 when elasticity of demand equals to 1, unit elastic demand. Second, if E is greater than 1, same example, 10, for say E is 2, greater than 1 is we have taken 2, 2 minus 1 by 2, ठीक है? It will be plus 1 by 2, that is 5.
So MR is equal to 5, but MR is positive, greater than 0. So MR will be positive or MR is greater than 0. Option में हो सकता है दोनों में से कुछ भी. Now, if E is less than 1, for example, we have taken E minus 1 divided by 0.5. Now it will be 10 into minus 0.5 upon 0.5 minus 1, that is minus 10. Is it clear? So MR is negative. So MR is negative means MR is less than 0. So ये 3 points आपको याद रहेंगे स्टूडेंट्स कि on the basis of this, how marginal revenue is related to the elasticity, how MR is related to elasticity. So when elasticity of demand is equal to 1, marginal revenue will be 0. When E is greater than 1, MR will be positive. When E is less than 1, MR will be negative. Right? तो ये ध्यान रहेगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और अब मैं एक नीचे जो ये लिखा है ये लाइन में डिस्कस कर रहा हूँ. इन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, राइट, in elasticity of demand you have already covered this कि on a straight line demand curve there are different elasticity of demand at different points, right? Now recall this कि if there is the straight line demand curve, we know that the elasticity at the middle point is equal to 1. मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये आपने elasticity of demand में already topic किया हुआ है. इससे कैसे relate करेंगे ये देखते हैं एक बार ध्यान से. So आपने पढ़ा था कि if there is a straight line demand curve, if there is a straight line demand curve, say DD, right? At its midpoint, what is the formula of elasticity of demand uh, point method? In point method, that is lower segment divided by upper segment, right? So say midpoint is M. So MD1 is equal to MD, so it will be 1. So at midpoint, elasticity of demand is always equal to 1, right? So whenever there is midpoint on a straight line demand curve, their margin revenue will corresponding to the 0. है ना? At that corresponding point, margin revenue. So if demand curve कौन सा कर्व है बच्चों? अभी मैंने लास्ट स्लाइड में पीछे कुछ है ना स्लाइड्स में बताया था कि the demand curve of a firm is its AR curve. It's AR curve. Yes or no? Right? So AR कर्व में ही जो है किसी भी फर्म का AR कर्व जो होता है दैट इज मार्जिनल डिमांड कर्व ऑफ द फर्म, राइट? सो इफ AR इज द डिमांड कर्व देन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल बी अंडर द AR कर्व, राइट? नाउ सी, बहुत क्लियरली देखेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. So when MR will be downward sloping and MR is less than AR, MR is less than AR, right? मार्जिनल ये आपने पढ़ा होगा, कॉस्ट में भी पढ़ा है, यूटिलिटी में भी पढ़ा है. तो मार्जिन जो होता है, मार्जिनल इज ऑलवेज फास्टर देन एवरेज. तो वेन एवर एवरेज रेवेन्यू इज फॉलिंग, मार्जिनल इज फॉलिंग एट द हाइएस्ट रेट. व्हेन एवरेज इज राइजिंग देन एमआर इज राइजिंग. ये आपने पढ़ा था ना एसी और एमसी कर्व, याद है? मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व, यस और नो? दिस इज द एसी कर्व, यू शेप, and this is the marginal cost curve U shape, and marginal cost intersect AC curve average cost at its minimum point. And when average cost is rising, marginal cost is above the average cost. Am I right or not? है ना? At this level, marginal cost is greater than average cost. So इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है, रिलेशन है ये कि मार्जिनल इज ऑलवेज फास्टर देन एवरेज. Students, right? Marginal is always faster than average. So whenever average revenue is falling, so marginal revenue is falling at the fastest rate. तो ये हमेशा नीचे रहेगा. तो अब ध्यान दें जरा, ये जो 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, at midpoint
elasticity of demand is equal to 1. So the corresponding margin revenue curve will intersect x-axis. So here margin revenue will be 0. Is it clear? Right? And at the upper half segment of the demand curve, elasticity of demand is greater than 1. Is it or not? Yes or no? So at upper, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने, at upper half segment of the demand curve, yes, the elasticity is greater than 1. So you can see that corresponding portion here MR is positive, greater than 0. So MR is positive. And at the lower segment, अब बताओ lower segment पे elasticity क्या होगी? At midpoint, elasticity of demand is equal to 1. At upper portion, elasticity of demand is greater than 1. So at lower portion, elasticity of demand is less than 1. Yes, negative. Marginal revenue is negative, right? Elasticity of demand will be less than 1, right? Not negative. So marginal elasticity of demand will be less than 1. So the corresponding marginal revenue will be negative. ये देख रहे हो आप नीचे जा रहा है negative axis की तरफ. So MR is less than 0. Is it clear students? तो ये ध्यान रहेगा हमेशा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया इस पर समझाने के लिए. सो ये एक तो आपको रिलेशन याद रखना है, MR इज इक्वल टू AR यानी प्राइस इंटू E-1/E. फिर आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं. When elasticity of demand is equal to 1, corresponding MR is equal to 0. When elasticity of demand is greater than 1, MR is positive. When elasticity of demand less than 1, MR is negative, right? And on straight line demand curve at the midpoint of the demand curve or AR curve, याद रहे demand curve अगर नहीं होगा तो AR curve लिखेगा. At the midpoint of the demand curve or AR curve, the corresponding MR curve will intersect x-axis where marginal revenue will be 0. I think it is clear to all of you, बच्चों, है ना? In a very simple way, I have explained this. So this is the another important topic we have covered here. So let us move to the next one. Now we are going to discuss prices output determination under different form of market, and on the basis of competition we have discussed there are two types of market. On the basis of competition, market had been divided. One is perfect competition and the other one is imperfect competition. So we are going to discuss here perfect competition, right? So first of all, to move ahead on this topic, I must explain you, and you have already learned about demand curve and supply curve, and the basis of the market. I have already told you on the basis of the market structure or the market we have going to discuss in this lecture series. So the most important thing is price determination, right? We जो मैं आपको पहले भी discuss कर चुका हूँ in a very beginning of this lecture. The price determination is the major task of the market, and the price is determined on the basis of what? On the basis of demand and supply. So इस point पर, इस topic पे there are very important questions can be framed in exam, right? So now first discuss that, and after that I will move on to the perfect competition, right? So we are going to discuss here the price determination. So let me okay. So first of all, we will discuss the price determination. So how the price is determined? So price is determined at the equilibrium of the
Just a minute, students. So, see, uh, how the price is determined. So price is determined at the equilibrium of demand and supply. Now, say what is the shape of demand curve? So we know the shape of demand curve is downward sloping from left to right, and supply curve is upward sloping from left to right, right? So this is the equilibrium of demand and supply, and how the equilibrium price or equilibrium quantity is determined. This is the demand curve. This is the supply curve. And we have are taking here the market demand and market supply curve. So you all know about the market demand and market supply, because there are two types of demand and supply in microeconomics. One is individual demand, individual supply. The other one is market demand, market supply. What is the difference? Individual demand stands for a different quantity demanded by a single individual consumer at different prices of a commodity, and individual supply is the different quantity supplied by the single individual supplier in the market at different prices. But we are taking here market demand, market supply. Means market demand is the sum total of the individual demands of all the buyers in the market, okay, for a particular product, and market supply is the sum of all the seller. So these are the market demand and supply curve. Where these demand and supply curves are intersecting, this is the equilibrium, market equilibrium or equilibrium price, that is market equilibrium. And this is the price at this point is equilibrium price, and the quantity determined here is equilibrium quantity, right? Now, is it clear to all of you, right? ये सबको पता है आपको, है ना? You are all aware about this, yes or no? So this is the equilibrium, market equilibrium, where we get equilibrium price and equilibrium quantity. Now, now the question is कि this price is one set, because perfect competition market we are going to discuss now, perfect competition market. So you must be aware about that. In perfect competition market, the price is determined by the industry, right? And this price is determined on the basis of what? On the basis of this, right? So this price is set by industry, and each firm, each individual firm has to follow this price only, right? Has to follow this price only. So, right, see,
this price, how this price is changed. अब यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है, how this price is changed. So this price will change only with the change in demand and supply. Whether the demand will increase or decrease, whether the supply will increase or decrease, right? So I'm going to discuss here this kind of questions you can have in the exam. So वो हम discuss कर रहे हैं. उसके लिए आपको दो चीजें समझनी यहाँ पे बहुत जरूरी है कि whenever there is a change in demand and change in supply, right? I am talking about change in demand and change in supply, not change in quantity demanded or change in quantity supplied. है ना? You all know what is the change in demand and change in supply. So change in demand or change in supply is also says as a shift in demand curve or shift in supply curve. Is it clear to all of you? Shift in demand curve and shift in supply curve. So change in demand there may be two forms of change. One is increase in demand, other is decrease in demand. Also, increase in, same here, increase in supply and decrease in supply. Is it clear to all of you? Now, how this increase and decrease happens, how this change in supply happens or change in demand. So you have already learned in second unit that change in demand or change in supply is change due to any other factor, due to any factor other than price, due to change in any factor other than price of the commodity, right? So whenever there is a change in demand or supply due to change in any other factor, and now what is are these factors? For in case of demand, there may be a change in income, right? Change in price of related goods, say substitute good, complementary goods, change in taste and preference, right? Change in price of expected price in future, expectation of change in price in future, change in income, right? Change in taste and preference. Very good. So these are the factors. And in case of supply, it may be due to the change in price of inputs, change in price of other goods, related goods, change in government policies, expectation of change in price. All these are. We are not going to discuss again that unit, because you have all covered in that unit, right? So in short, these are increase in demand, decrease in. बस आपको जो याद रखना है, what you have to be kept in your mind, that is whenever there is increase in demand, the demand curve will shift to the right, shift in right. This is the demand curve. So whenever there is an increase in demand, demand curve will shift to the right. That is increase in demand. And when there is a decrease in demand, demand curve will shift to the left. This will in this way shift to the left. Is it clear? Similarly, when there is increase in supply, this is the supply curve. Again, supply curve will shift to the right. What is the right of this? This S1, S1. This is increase in supply. And when there is decrease in supply, supply curve will shift to the left. This one. Is it clear, or anyone has any doubt in this? Because this is the base of what I am going to discuss further, right? और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों. दिस इज द टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं. और कैसे आएंगे क्वेश्चन मैं भी आपको बताऊंगा. So first of all, you have to keep in your mind कि whenever there is increase in demand or increase in supply, the demand or supply curve, है ना, will shift to the right. And whenever there is a decrease in demand or supply curve will shift to the left. Is it clear? So see how the questions arises. The questions are ki, for example, if there is, what will be the effect on, what
will be the effect on price and quantity, if there is increase in demand, if there is increase in demand. सो अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कैसे हम पता लगाएंगे? रफली ये डिमांड कर्व हो गया, this is the supply curve, this is equilibrium price and equilibrium quantity. Now when there is increase in demand, demand curve will shift to the right. Now supply में कोई change नहीं है because only increase in demand, so new equilibrium point between D1 and S is this one E1, so price will increase and quantity will also increase, right? So you can give the answer in this way. Second one is देखो, if there is decrease in supply, so supply curve will shift to the left. This is the demand curve, this is the supply curve, this is equilibrium point, this is equilibrium price and quantity. Now there is decrease in supply, supply curve will shift to the left. Now new equilibrium is E1, so equilibrium price will increase but equilibrium quantity will decrease. Price will increase, quantity will decrease, right? यहां तक क्लियर है? राइट. सो अभी इस पे कुछ कई बार क्या होता है कि देयर आर अ स्पेसिफिक कंडीशन, इट कैन आल्सो held the condition here. For example, third one is decrease in demand, when supply is perfectly inelastic. Supply is perfectly inelastic. अब फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे टाइप करके कि व्हेन द परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, डिमांड और सप्लाई कुछ भी हो सकता है, वेन एवर द डिमांड सप्लाई कर परफेक्टली इनइलास्टिक, मुझे बस इतना लिख के बताएं व्हाट विल बी द शेप ऑफ सप्लाई कर. सप्लाई कर की शेप क्या होगी? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बस ये लिखना है आपको, वेदर इट विल बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, राइट? सो डिक्रीज इन डिमांड, केस इज डिक्रीज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा प्राइस और क्वांटिटी पे? तो फटाफट से आई एम वेटिंग, आपको बस टाइप करना है वेदर सप्लाई कर विल बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जल्दी से बताएं, राइट? सो हमें क्या पूछा है कि डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो वी हैव सीन द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस इज द डिमांड कर्व. डिमांड कर्व का शेप नॉर्मल रहेगी. सप्लाई जो है दैट इज परफेक्टली, क्या बोला मैंने? परफेक्टली इनइलास्टिक. सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक. तो ध्यान रहेगा बच्चों, whenever the demand or supply will be perfectly inelastic, the curve will be vertical. याद है नहीं? सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक बोला मैंने, इलास्टिक नहीं बोला है. तो इनइलास्टिक मींस whatever the price, no change in quantity supplied, so it will be vertical. And when it is perfectly elastic, when it is perfectly elastic, then it will be horizontal, राइट? परफेक्टली इनइलास्टिक है तो कैसा होगा कर्व? वर्टिकल होगा. किसी को कोई डाउट है अभी भी? राइट? सो सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक, दैट इज वर्टिकल. सो अब इस केस में उसने बोला है देयर इज डिक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड कर्व, नाउ द इक्विलिब्रियम, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दिस, द प्राइस इज दिस, द क्वांटिटी इज दिस, राइट? क्वांटिटी इज दिस. नाउ see, when the demand is decreased, demand curve shift to the left. This is the leftward shift in demand curve. Now, what is the new equilibrium point? That is E1 this and price is this P1.
So what will be the effect? Price fall, no change in quantity, constant. Quantity में कोई change नहीं है, remain constant. Is it clear? Right? अब एक condition और देख लेते हैं. When there is increase in supply and demand is perfectly elastic. Perfectly elastic. I hope you all are carrying your notebook and pen pencil. So फटाफट से आप देखते हैं कौन कितना फास्ट का समझ रहा है इसको. आप इसको खुद से बनाएं रफली और फटाफट से अपना आंसर तैयार रखें कि व्हाट विल बी द देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई. तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको ये मेंशन करना है चैट बॉक्स में कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मार्केट प्राइस एंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. राइट. सी, demand is perfectly elastic, so demand curve will be horizontal. What is the normal shape of supply curve? Supply curve is upward sloping, that one. The equilibrium point is this. ये price है, ये quantity है. Now he is saying कि there is a increase in supply. So supply curve will shift to the right. Increase in supply है, तो supply curve will shift to the right. So new equilibrium is this. So what will be the answer? देखे जरा किसने क्या आंसर दिया है किसी ने आंसर? नहीं दिया. किसी का आंसर रेडी नहीं है? चलो, ओके. someone is saying कि quantity will increase, sir. Yes, quantity increase and there is no change in price, right? So price में no change, quantity will increase. I think ये सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया. क्लियर है बिल्कुल? राइट. चलो, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस पे क्वेश्चन, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन जो है जरूर आता है इस पे. अब एक और मैं बता रहा हूँ टेक्निक, एक तरीका कि कैसे क्वेश्चन इस पे आता है. एक और तरीके के क्वेश्चन है. यहाँ तो मैंने क्लियरली बता दिया. हेयर आई हैव ऑलरेडी क्लियरली मेंशन दैट वेदर देयर इज increase or decrease in supply. But in few cases the question is framed where you will have to identify whether the demand will increase or decrease, because it will give you the factor, right? You have knowledge about the factor affecting demand and supply. I have already discussed here increase in income, decrease in income, whether it will affect the demand or supply. तो इस पे भी आपको खुद से जज करना पड़ेगा whether there will be demand increase or decrease in demand, right? तो वो डिस्कस करते हैं. उससे पहले फटाफट से एक चीज मैं यहाँ पर ये डिस्कस कर रहा हूँ. ये दो केसेस हैं यहाँ पर, देखेंगे बच्चों ध्यान से. फर्स्ट वन इज व्हाट विल हैपन इफ बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज. डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज. बताओ, अगर डिमांड सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा? तो सर यहाँ पर तीन सिचुएशंस हो सकती हैं. फर्स्ट सिचुएशन कि इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई. सेकेंड सिचुएशन, increase in demand is less than increase in supply. And third situation, when increase in demand is more than, less than, and equals to increase in supply, right? So there may be three situations, right? So there can be three situations where increase in demand is more than increase in supply, where increase in demand is more than less than increase in supply, and where both are equal. So there may be three different answers. तो मैं आपको एक
लाइन में बता दूंगा इसका आंसर आपने क्या टिक करना है। पहले हम इसको जरा एक बार फटाफट समझ लेते हैं। फर्स्ट केस इज, ये तो आपको क्लियर है कि व्हेन बोथ आर इंक्रीजिंग मींस डिमांड एंड सप्लाई कर बोथ आर शिफ्टिंग टू द राइट, इज इट और नॉट? When both demand and supply are increasing, both will be shift to the right. So this is the demand curve, this is the supply curve, this is the equilibrium price and quantity. बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। So there is a both are shifting to the right, but increase in demand is more than increase in supply. तो डिमांड कर्व को हम ज्यादा गैप से शिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज, एंड सप्लाई में जो राइटवर्ड शिफ्ट है वो कम रख रहे हैं, दिस वन। So new equilibrium of D1 and S1 are this. At this point, quantity will increase and price will also increase, but increase in price is less than increase in quantity. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? Both price and quantity are increasing. In second case, when demand increase less than supply, this is the demand curve, this is the supply curve. Both are increasing, shifting to the rightward. This one is equilibrium price quantity, but demand shifts slightly less and supply large gap. So this one is the E1. Quantity will increase, price will decrease. So your price is increasing, quantity is decreasing. Is it clear? Now the third case is when both are increasing equally. So both are shifting to the right with equal gap. Understood? Both are shifting to the right with equal gap. This is the demand curve shifting, and this is the supply curve shifting. So the equilibrium point will be this. So no change in price, price में no change, quantity will increase. सो अब फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में ये बताएंगे कि इन तीनों केसेस में क्या चीज कॉमन लग रही है हमें, फटाफट से बताएंगे जल्दी। इन तीनों केसेस में एक चीज कॉमन है, सेम है, वो क्या है? एक चेंज जो है वो बिल्कुल सेम है तीनों केसेस में। जल्दी। सो तीनों में जो चेंज है वो है क्वांटिटी की इंक्रीज इन क्वांटिटी, राइट? तीनों केसेस में आप देखेंगे क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, क्वांटिटी इंक्रीजिंग। प्राइस में क्या हो रहा है? प्राइस में भी इंक्रीजिंग, राइट? प्राइस में भी डिक्रीजिंग, राइट? प्राइस में भी इंक्रीजिंग, प्राइस में भी डिक्रीजिंग, और प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। यस, बिल्कुल सही। क्वांटिटी इंक्रीजेस, तो तीनों में जो कॉमन है दैट इज क्वांटिटी इंक्रीजेस। तो अब इसमें मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ एक लाइन, ये आप इसको नोट कर लें बच्चों, नोट इट डाउन, ठीक है? मार्क माय वर्ड्स कि अगर क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर कौन से ऑप्शन पे आपने टिक करना है। मैं बिल्कुल आपको एक लाइन में इसका आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि वो आपको वहां पे केसेस मेंशन नहीं करेगा वेदर डिमांड इंक्रीजिंग मोर और सप्लाई इज इंक्रीजिंग मोर। आपको ये दे दिया बोथ आर इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको नोट करेंगे। इफ बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेज आर इंक्रीजिंग, आर इंक्रीजिंग। अब ये नहीं बताया ना कि विच वन इज इंक्रीजिंग मोर और लेस और इक्वल, तो सिंपल ये पूछा है बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इंक्रीजिंग, तो हमारा आंसर क्या होगा? equilibrium quantity will increase, price may or may not change, it depends on the condition. Similarly, if both demand and supply are decreasing, तो आंसर क्या होगा? equilibrium quantity will decrease, price may or may not change. Is it clear?
प्राइस मे और मे नॉट चेंज। एनी डाउट? तो ये हमने डायरेक्ट आंसर देख लिया है कि अगर ये कंडीशन मेंशन नहीं करते हैं वो, तो आपको क्या आंसर देना है कि इफ प्राइस बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इंक्रीजिंग, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल श्योरली इंक्रीज, प्राइस may or may not change depending on the condition. Similarly, if demand and supply are decreasing, equilibrium quantity will decrease, price may or may not be change depending on the condition. राइट? अब मैं उस टॉपिक पे आता हूँ, जैसे बता रहा हूँ कि इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक डायग्राम बना होगा, उस डायग्राम में देर आर डिफरेंट डिमांड कर्व, से D1, D, D2, also S, S1, S2, and these are the points, say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। क्लियर है ये चीज? ये 6 पॉइंट है, ये 5th है, ये 4th है, ये 1 2 3 है। क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पर? एक चीज ध्यान रखनी है कि हर क्वेश्चन में, जो मैं नीचे क्वेश्चंस मेंशन कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट इज 1। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 1 है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? फर्स्ट, व्हाट विल बी न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, व्हाट विल बी न्यू equilibrium point if consumers income increase। इफ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीज, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? अभी इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम है, जो कंज्यूमर की इनकम है, सॉरी, ये डिमांड को इफेक्ट डालेगी या सप्लाई को? whether it will demand affect the demand or supply? So yes, it will affect the demand. And how it will affect? अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है और कुछ मेंशन नहीं है तो इन कमोडिटी को हम नॉर्मल ट्रीट करेंगे, है ना? अगर स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि इंफीरियर है तो हम उसको इंफीरियर ट्रीट करेंगे। इज इट क्लियर? सो अभी कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम नॉर्मल गुड ले रहे हैं। तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड विल इंक्रीज। क्या होगा इसका इफेक्ट? डिमांड विल इंक्रीज। सो डिमांड जब इंक्रीज होगी तो न्यू डिमांड कर कौन सा होगा? टू द राइट, D2, है ना? D2 एंड सप्लाई कर वही S है। सो D2 और S पे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा आ रहा है बच्चों? 2। तो हमारा आंसर होगा .2। .2 विल बी न्यू इक्विलिब्रियम, राइट? ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेम है, व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इफ इफ prices of prices of inputs डिक्रीज। इनपुट्स के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं। अब देखते हैं, हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है बच्चों? 1 है। ये 1 हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये डिमांड कर्व है D, सप्लाई कर S। देयर इज फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट्स। तो बताओ जो प्राइस ऑफ इनपुट्स है ये किसको इफेक्ट करेगा? ये फैक्टर डिमांड को या सप्लाई को? वेदर इट विल इफेक्ट द डिमांड और सप्लाई? सप्लाई, राइट? सो सप्लाई को इफेक्ट करेगा। कैसे सप्लाई कर इफेक्ट करेगा? सप्लाई विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर इनपुट्स के प्राइसेस फॉल कर रहे हैं तो वेदर सप्लाई विल इंक्रीज और डिक्रीज? सप्लाई विल इंक्रीज, यस। तो सप्लाई जब इंक्रीज होगी तो हमारा जो न्यू सप्लाई कर्व है दैट विल बी S1, राइट को शिफ्ट होके हो जाएगा S1। डिमांड कर्व वही रहेगा, टी हमारा जो है। सो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी 8। तो आंसर होगा .8। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर वो सिचुएशंस बता देंगे आपको, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है डायग्राम पे देखना है कि न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा। ठीक है जी। सो ये हमने एक टॉपिक जो है यहाँ पर कवर किया। नाउ अब हम मूव करेंगे
परफेक्ट कंपटीशन पे, राइट। सो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें हम पहले बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की। तो इससे पहले कि हम इस पे जाएं, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस मार्केट। सो सी, इन जनरल इट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, हम देखो किसी भी मार्केट को व्हेनेवर वी आर डिस्क्राइबिंग, वी आर डिफाइनिंग एनी पर्टिकुलर मार्केट, फॉर्म ऑफ मार्केट, वेदर परफेक्ट कंपटीशन, वेदर मोनोपोली, वेदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली मार्केट, जनरली वी क्लब्ड ऑल द फीचर्स। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्केट, वी विल क्लब द फीचर ऑफ दैट मार्केट। तो उनके फीचर्स को मिला के डेफिनेशन बनती है। फॉर एग्जाम्पल, if we want to describe, we define the perfect competition market, we can say perfect competition is the form of market where many large number of buyers and sellers selling homogeneous product at a uniform price with free entry and exit in the market, right? तो ये सारे फीचर्स को जब हम मर्ज कर देंगे, क्लब कर देंगे, तो उसकी डेफिनेशन बन जाती है, राइट। सो नाउ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स और उनकी इम्प्लीकेशंस देखेंगे। इम्प्लीकेशन मीन कि उस फीचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फीचर जो है इसका वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। perfect competition market में there are large number of buyers and seller who compete among themselves, और वो आपस में compete कर रहे हैं। मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है मार्केट में, लेकिन देर आर डिफरेंट बायर्स कंपीटिंग विद ईच अदर कि मैंने खरीदना है, मैंने खरीदना है, राइट। ऐसे ही डिफरेंट सेलर्स एंड ऑल सेलर्स आर कंपीटिंग विद ईच अदर कि मुझे बेचना है, मुझे बेचना है, तो दे आर कंपीटिंग फॉर अ यूनिफॉर्म प्राइस or for a homogeneous product at a uniform price, right? So there are large number of, very large number of buyers and seller, and their number is so large, उनका number इतना ज्यादा है that no buyer or seller is in position to influence the demand or supply in the market, and price also, price को भी influence नहीं कर सकते। So therefore we say in perfect competition market only industry is the price maker, firm are price taker, not an individual buyer or seller can influence the market price। is it clear, right? So इसकी implication क्या हुई, what is the implication, this feature, इस feature की implication क्या हुई, because in perfect competition market there are large number of buyers and seller, so no single buyer or seller can influence or affect the price, right? क्योंकि जब इतने सारे बायर्स हैं, देर आर सो मेनी बायर्स, राइट, सो द डिमांड बाय अ सिंगल बायर इज वेरी इनसिग्निफिकेंट, राइट। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है कि एक सिंगल बायर जो डिमांड कर रहा है, इंडिविजुअल बायर, दैट इज वेरी इनसिग्निफिकेंट, राइट। सो अगर वो बायर जो है, इफ दैट बायर स्टॉप्स बाइंग दैट कि प्राइस इज वेरी हाई, वो नहीं खरीदेगा, तो देर विल बी नो इफेक्ट ऑन ओवरऑल मार्केट डिमांड, देर आर फ्री एंट्री एंड एग्जिट, और बायर आ जाएंगे मार्केट में, राइट। तो देर आर very large. So similarly, a single seller has a very insignificant market share in the total supply. So if the seller stops supplying that particular commodity, so there is no any scarcity of the product, ki price will fall down, right? Is it clear? So what is the implication of this? So perfect competition market may first feature is very large number of buyers and seller, not a single buyer or seller can influence the market price. Then every firm is a free to enter, or the second one is, sorry, homogeneous product. All the firms, all the seller are supplying the homogeneous product, right? What is the meaning of homogeneous here? Homogeneous means identical, similar, right? Same. So all the seller are supplying the homogeneous product. Is it clear? So product is similar, identical in all nature, right? Color, size, shape, हर तरीके से. Then free entry and exit. Whenever any new firm wants to enter in the market, can enter, and whenever any firm
want to leave the market can easily leave that market, right? There is no restriction on entry and exit, right? So, then there is a perfect knowledge. मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था. हु हैज द परफेक्ट नॉलेज about the market? All buyers and seller both. On the part of buyer and seller, the quantity of stock of goods in the market, market conditions, price at which transaction of purchase of sale are being entered into, all these market conditions are clearly, uh, all buyers and sellers are aware about that. They have a perfect knowledge, both buyer and seller, right? So far we have discussed the four features. One is large number of buyers and seller. यार इसकी implication क्या है कि not a single buyer or seller can influence the, right? Yes, example is a vegetable market. Yes, but uh, I will discuss here कि basically जो vegetable market है, that is not perfect competition market. It is a pure competition market, right? बिल्कुल perfect नहीं है वो, क्योंकि because there is a difference between perfect and pure competition. So you will see the it is a pure competition market. अभी मैं डिस्कस कर दूंगा कैसे है. तो फिलहाल अभी यहाँ पर देखें तो फर्स्ट वन हो गया, सेकंड होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट टू बोथ बायर एंड सेलर, राइट? अच्छा, इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी? व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ फ्री एंटर? फ्री, एवरी फर्म कैन एंटर फ्रीली और गो आउट, और बायर भी जा सकता है, ठीक है? बायर भी मार्केट उस प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दे, छोड़ दे, कुछ भी. तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स, ठीक है? तो इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी? इसकी इंप्लीकेशन होगी देयर फॉर इन लॉन्ग रन, इन लॉन्ग रन ईच फर्म, ईच फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट. ये इसकी इंप्लीकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? नॉर्मल प्रॉफिट, ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है कि ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट, दिस इज द फीचर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मार्केट. यस, परफेक्ट कंपटीशन के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अभी सारे पॉइंट डिस्कस कर दूं, फिर एग्जांपल बताता हूं. वैसे देखा जाए तो जब आप पढ़ेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन इज प्योरली अ मिथ. ये एक मिथ है. ऐसी मार्केट देखने में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है. लेकिन अगर हम इसको एक कंसेप्ट और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एवरी प्रोडक्ट हैज परफेक्ट कंपटीशन, है ना? तो आई एम, दो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं यहाँ पर बातें, तो मैं बताऊंगा. इसलिए क्या होता है कि ये जो मार्केट है ये बहुत ही सस्पिशियस मार्केट है, ठीक है? तो इसके एग्जाम्पल्स अगर आपको कुछ मिलते भी है कि दैट इज फिश मार्केट, राइट, वेजिटेबल मार्केट, या फूड ग्रेन्स, राइट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फूड ग्रेन्स मार्केट, सो दे आर प्योर कंपटीशन. प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट में एक मार्जिन डिफरेंस है, वो मैं अगली स्लाइड में डिस्कस करूंगा, राइट? सो यहाँ पर एक, अगर ये क्वेश्चन भी आता है अक्सर कि चारों मार्केट के नाम दे दिए, परफेक्ट कंपटीशन ऑप्शन में है, प्योर, राइट? सो वट एवर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम मिथ, तो हम परफेक्ट कंपटीशन पे टिक करेंगे, राइट? सो परफेक्ट नॉलेज, फ्री एंट्री एंड एग्जिट. फ्री एंट्री एंड एग्जिट का इम्प्लीकेशन समझ में आ गई सबको कि ड्यू टू दिस फीचर द perfect competitive firm always gets a normal profit in long run. Now move to the next feature. Facilities exist for movement of goods from one center to another, है ना? यानी freely goods को जो है हम मूव करा सकते हैं. तो there is a परफेक्ट मूवेशन, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. ऑल्सो बायर हैव नो प्रेफरेंस एज बिटवीन डिफरेंट सेलर, बिकॉज बायर को सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वी कैन इजिली बाय फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेलर और दैट सेलर, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन प्राइस एंड, है ना, प्रोडक्ट. Then other is commodity of goods are dealt uniform price being constant here. क्यों है यूनिफॉर्म प्राइस? इसका रीजन बिल्कुल क्लियर है. यूनिफॉर्म प्राइस इसलिए है थ्रू आउट द मार्केट बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल फर्म आर प्राइस टेकर. तो इसका एक फीचर ये भी आता है, फर्म्स आर प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर. इज इट क्लियर? राइट. फर्म इज प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर. अब इंडस्ट्री कैसे प्राइस सेट करती है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. जहां भी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई विल बी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट विल बी द प्राइस
set by the industry, right? And each individual firm has to follow that price. तो यूनिफॉर्म प्राइस रहता है यहाँ पे। नाउ ये सारे फीचर्स हमने देख लिए। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखना है, इस पॉइंट में आता है ना यहाँ पर कि देयर इज अ फ्री मूवमेंट, तो हम कह सकते हैं देयर इज अ जीरो सेलिंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ऐसा हम ये नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन फ्री में हो रहा है या एडवर्टीजमेंट फ्री में हो रही है। जीरो क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एवरी सेलर जो प्राइस इंडस्ट्री सेट करेगी, इस पॉइंट को समझेंगे बहुत ध्यान से। व्हाई वी आर सेइंग कि देयर इज अ सेलिंग कॉस्ट जीरो, देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो। इट मींस कि उनको ट्रांसपोर्टेशन पे फ्री में हो रहा है, उनका एडवर्टीजमेंट फ्री में हो रही है। Basically, under perfect competition market, when the buyer have a full knowledge, perfect knowledge, so there is no need for the particular firm or individual firm to advertise, right? Because every buyer knows that this product will be available to all these sellers at a same price, and product का भी पता है उनको, है ना, uniform homogeneous product है, so they need not to be advertise. So अगर वो advertise करते भी हैं तो they will not charge separate, है ना, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट सेपरेटली चार्ज नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेपरेटली चार्ज नहीं करेंगे। ऑल दीज कॉस्ट दे हैव टू कवर इन द प्राइस सेट बाय द इंडस्ट्री। So that is why we are saying zero selling cost and transportation cost, right? They will not charge separately the advertisement cost and transportation cost. They have to cover all these in the price set by the industry. No seller, no one firm can say that I am getting the higher advertisement cost or transportation cost, so I will charge a more amount because price will remains constant. Is it clear, right? अब यहाँ पर नीचे लिखा भी है, देखो ध्यान से, कि there will be few example of perfect competition which is regarded as myth by many. ये myths हैं, क्योंकि प्योर परफेक्ट नहीं है। प्योर जैसे ग्रेन मार्केट्स है, ग्रेन मार्केट अप्रोच द कंडीशन, इसने ये नहीं बोला दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो, ग्रेन मार्केट अप्रोच द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मतलब इट इज वेरी मच नियर टू द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, है ना, नियर है, अप्रोच टू द परफेक्ट कंपटीशन, राइट? वैसे हम जितने भी एग्जांपल्स देखते हैं, ग्रेन मार्केट, फिश मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, ऑल दीज आर द प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन इज अ, अब क्या है प्योर कंपटीशन, इसको लिख लो अपने पास, मार्क माय वर्ड्स, नोट इट डाउन। What is pure competition? Pure competition is a restricted form of perfect competition. लिख लो इसको, pure competition is a restricted form of perfect competition. Now what is the restriction? हमने अभी जितने भी फीचर, all the features we have discussed earlier, if the only first three feature exist, है ना, or any of the other feature does not exist, then market will be pure competition, not perfect. And if all the features of perfect competition exist in any market for any product, then it will be perfect competition. First three features कौन से हैं? Large number of buyers and sellers, homogeneous product, free entry and exit, right? So अगर हम ग्रेन मार्केट की बात करते हैं, वेजिटेबल मार्केट्स की बात करते हैं, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, परफेक्ट नॉलेज गेन लॉस कर रहा है। कैसे? आप फूड ग्रेन या वेजिटेबल्स की बात करें, तो जैसे आप कोई भी अनियन या पोटैटो या टोमेटो खरीदने जाते हो मार्केट में, और डिफरेंट सेलर सेलिंग फॉर अ डिफरेंट प्राइजेस, then if you ask कि why you are selling 45, he is selling at 40 rupees per kg, he says कि ये देसी टमाटर है ना, या ये ना कुछ भी नासिक का प्याज है। सो बट द बायर हैव नो नॉलेज अबाउट how he or she can differentiate basically whether this onion from Nasik or not, है ना। So इतनी नॉलेज नहीं है, दैट्स व्हाई द प्राइस में डिफर इन द मार्केट, है ना, सेम नहीं है वहां पे प्राइस। ऐसी ग्रेन मार्केट में भी है, यू हैव नो नॉलेज, बायर हैव नो परफेक्ट नॉलेज अबाउट व्हाट इज द ग्रेड ऑफ दैट ग्रेन, है ना, whether you are buying the rice or wheat, or then you are not have a knowledge कि आप उसको टच करके या पता लगा लें कि उसका ग्रेड क्या है, उस हिसाब से फिर वो प्राइस वेरी कर लेते हैं। बट पहले तीन फीचर बिल्कुल है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर मिलेंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलेगा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगी। सो दीज मार्केट्स आर प्योर कंपटीशन, नॉट परफेक्ट कंपटीशन।
इज इट क्लियर? अब जैसे मैंने बोला था कि अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एवरी प्रोडक्ट हैज अ परफेक्ट कंपटीशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोप इंडस्ट्री की बात करूं या शैम्पू इंडस्ट्री की बात करूं, फॉर एग्जांपल हेड एंड शोल्डर की बात करूं, बिकॉज यहाँ पर ये नहीं बोला है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, ब्रांड। तो अगर मैं एक सिंगल ब्रांड की बात करूं, हेड एंड शोल्डर, तो अगर हेड एंड शोल्डर एक प्रोडक्ट है तो उसके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर है। बट ये ध्यान रखना, जैसे ही आप बात करेंगे शैम्पू या सोप इंडस्ट्री की, देन इट विल बी अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली डिपेंडिंग ऑन देयर, है ना, इंडस्ट्री की बात करें। बट अगर हम एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात कर रहा हूँ, हेड एंड शोल्डर, तो आप देखें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर है, सेलर भी बहुत हैं। हर जनरल स्टोर पे, हर मेगा मार्ट पे, आप जहां पर भी मिल रहा है आपको मिल जाएगा, है ना, डिफरेंट है तो उसमें मिलेगा। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, राइट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, कोई भी सेलर उसको रखना शुरू कर दे, बंद कर दे, राइट। सेम प्राइस मिलेगा, होमोजीनियस यूनिफॉर्म प्राइस, आप किसी भी स्टोर पे खरीदेंगे एमआरपी सेम है, सेम प्राइस मिलेगा, और पैकिंग भी सेम मिलेगी, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, राइट। तो सारी चीजें सेम है। तो ऐसे अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर ब्रांड या पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो पर्टिकुलर, हर पर्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है, राइट। लेकिन जैसे आप पूरी इंडस्ट्री की बात करेंगे कि डिफरेंट कंपटीटर्स आ गए मार्केट में, ब्रांड आ गए, देन दैट सोप इंडस्ट्री विल बी इधर पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ओलिगोपोली। आई थिंक इट इज क्लियर और नॉट, राइट। सो यहाँ पर ध्यान रहे कि दैट्स व्हाई मेनली जो इकोनॉमिस्ट एंड एक्सपर्ट से कि इट इज अ मिथ, है ना। ये परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एक मिथ है, क्योंकि ऑल फीचर्स जो है वो एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है जी। नाउ दीज आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से। Now, how the price determined under perfect competition market, तो इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल दिस कि इंडस्ट्री is a price maker here, right? Industry is a price maker here. And industry, what is industry? Industry is a, लिखा भी है यहाँ पर, an industry in economic terminology consists of a large number of independent firms, right? तो जितनी भी फर्म्स मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेच रही हैं या बना रही हैं, वो सारी फर्म्स को कलेक्टिवली मिला के हम इंडस्ट्री का नाम देते हैं। ईच हैविंग अ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, फार्म्स एंड माइंस अंडर इट्स कंट्रोल, राइट। हर एक इंडिपेंडेंट जो फर्म है, उस फर्म के अपनी नंबर ऑफ फैक्ट्रीज होंगी, है ना, किसी बड़े नंबर ऑफ फार्म्स हैं, माइंस हैं, ठीक है। हर फर्म की, हर एक इंडिविजुअल फर्म के देर आर सो मेनी फैक्ट्रीज ऑफ दैट फर्म या माइंस या फार्म्स, है ना। And all these firms collectively called industry. So when the total output of the industry means supply, total output means supply of the industry, जिसको market supply बोलते हैं, equal to the total demand, we say that industry is in equilibrium, है ना। I have already discussed it in detail. So uh, in industry is in equilibrium, and the price then prevailing at this equilibrium price, और जो इस equilibrium point पे price आएगा, that price will be equilibrium price, right? That price will be equilibrium price. Whereas a firm is said to be in equilibrium when it has no incentive to expand or contract the production. ये भी ध्यान रखना है आपको। ये मैं इंडस्ट्री की बात कर, देखो नीचे लिखा भी हुआ है डायग्राम, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। ध्यान रहे, जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, वेन एवर देयर इज रिटर्न अ कॉम्पिटिटिव फर्म, राइट, सो आप समझ जाएंगे कि हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, राइट। मैं कुछ टर्मोलॉजीज यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में कई बार हम गलत आंसर टिक करके आते हैं, बिकॉज हम टर्म्स नहीं समझ पाते हैं, राइट। सो प्लीज नोट इट डाउन, whenever there is a mention ki a competitive firm, so you must have clear in your mind कि competitive firm means a particular individual firm under perfect competition market. So we are talking about perfect competition market. Is it clear? चलो, so equilibrium price कैसे set होता है? Where the total market demand and market supply are equal, that price will be equilibrium price. This price will be set by the industry, and each firm has to follow that particular price. Is it clear? नाउ ये तो हो गया इंडस्ट्री। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर, दीज आर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म, राइट। दीज आर द
डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ द firm. Right now, sorry, industry. These are the demand and supply curve of the industry. But what will be the demand curve of and the supply curve of the firm? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं. देखो, इंडस्ट्री के डिमांड सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड स्लोपिंग होंगे रिस्पेक्टिवली. बट जो पर्टिकुलर फर्म है उसका डिमांड कर्व कैसा होगा, तो ये देखेंगे यहाँ पर. सी, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, हाउ द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इंडस्ट्री का, तो इक्विलिब्रियम हमने निकाल लिया. इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम कैसे आ रहा है, जहां पर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं है ना. लेकिन फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा या फर्म कहाँ ऑपरेट करेगी वो देखना है. सो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, तो ध्यान रहे कि फर्म का जो इक्विलिब्रियम होता है, रिमेंबर दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म विल बी द पॉइंट वेयर इट गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट. राइट, दैट लेवल ऑफ आउटपुट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ क्वांटिटी और आउटपुट वेयर the firm gets maximum profit is the firm's equilibrium. तो ध्यान रहेगा. अभी जो आपने लास्ट स्लाइड में देखा, यहां भी है, देखो इस स्लाइड में भी, ये जो मार्केट है, मार्केट का मतलब है इंडस्ट्री. मार्केट मींस इंडस्ट्री. तो ये जो मार्केट या इंडस्ट्री है, इसका तो ये इक्विलिब्रियम आ गया. बट फर्म का इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम नहीं है, ये कर्व है. इक्विलिब्रियम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा. फर्म्स इक्विलिब्रियम इज द आउटपुट which gives maximum profit to the firm is called equilibrium output. So firm का equilibrium output या equilibrium point वहां आएगा where the firm gets maximum profit. In equilibrium state, the firm has no incentives, and when the firm will be at equilibrium, it has no incentive either to increase or decrease output. Right, क्योंकि वहां पर उसको profit maximize हो रहा है. So being an seller, being a firm, ठीक है, being a firm or seller, if you are getting the maximum profit, right, do you have any incentive to increase or decrease the quantity? No, right, because you are already getting the maximum profit. So no one will uh, want to change that particular level of output where he gets maximum profit, right? So since it is maximum profit giving output, which only gives no incentive to increase or decrease the output, so it is equilibrium when it gets maximum profit. तो is it clear बच्चों कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आएगा, वेयर अ फर्म गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट. राइट, where the firm gets maximum profit. And how that particular point is attained, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे. फिलहाल अभी यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिख रहा है, what this figure is showing, द यहाँ पर आप देखो, एक पार्ट जो है वो है इंडस्ट्री, एक ये फर्म. सो मार्केट और इंडस्ट्री का जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई, डिसाइडिंग द प्राइस बी. नाउ बीइंग अ इंडिविजुअल सेलर और परफेक्ट कंपटीशन में, फर्म इज अ प्राइस टेकर, तो दिस प्राइस पी इज फॉलोड बाय द फर्म. और इस पे चाहे जितनी भी क्वांटिटी डिमांडेड हो, देखो ये डिमांड कर्व है, देखो यही डिमांड कर्व है फर्म का, यही ए आर कर्व है एंड यही एम आर है. बट ये ध्यान रहे, मैंने एक चीज बताई थी कि हर मार्केट में, इन एवरी मार्केट, डिमांड कर्व इज इक्वल टू ए आर कर्व. राइट, बट एम आर इज इक्वल टू ए आर, ये ओनली इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, हर मार्केट में नहीं होता, ओनली इन परफेक्ट कंपटीशन. उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है बिकॉज प्राइस यहाँ कांस्टेंट होता है, लेकिन हर मार्केट में प्राइस कांस्टेंट नहीं होता, पर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस कांस्टेंट नहीं होते. तो वहां ये नहीं होगा एम आर इज इक्वल टू ए आर, ये सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होगा. राइट, हाँ, बट ये जो होता है ए आर कर्व इज डिमांड कर्व इन एवरी मार्केट, ये हर मार्केट में होगा, तो ये नोट कर लेंगे जरूर. इन एवरी मार्केट डिमांड कर्व इज द ए आर कर्व ऑफ एवरी फर्म. इज इट क्लियर? चलो, सो द फर्म का जो प्राइस है वो इक्वल हो गया कांस्टेंट. तो अब वट एवर द क्वांटिटी फर्म इज सेलिंग, वेदर इट इज सेलिंग Q1, वेदर इट इज सेलिंग एन क्वांटिटी, एम क्वांटिटी, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट. सो फर्म्स ए आर एम आर कर्व जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन. एंड डिमांड कर्व भी कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल. अब फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओ कि अगर इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म का ये डिमांड कर्व जो है, ए आर कर्व, ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसकी जो डिमांड है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक. इससे पहले कि मैं लिखूं, आपका रिप्लाई आ जाए, परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक, क्या लिखें इसको. सो
perfectly inelastic. Very good. Right. So it is perfectly inelastic. तो हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की जो डिमांड होता है वो कैसी होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है सर। वेरी गुड। तो जब भी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होगी इट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो, ये भी ध्यान रहेगा। इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक, गलत लिख दिया मैंने, परफेक्टली इलास्टिक है डिमांड। एक मिनट, perfectly elastic. क्यों? Because price remains constant. So whatever quantity the firm wants, the buyer wants it, है ना, the firm is ready to sell at a particular price. Price is constant ना, तो horizontal है तो demand क्या होगी, perfectly elastic. That is called infinity. Perfectly elastic means infinity. But the slope of demand कर, ये सब आपने demand वाले chapter में पढ़ा होगा। Elasticity will be infinity, but the slope of demand curve will be zero. Slope of DD curve is zero, right? Whenever the any curve or line is horizontal, its slope is zero, right? चलो, तो डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। तो ये ध्यान रहेगा, इन्फिनिटी डिमांड होती है क्योंकि इलास्टिक इसलिए है क्योंकि इलास्टिक का मतलब क्या है, सेम प्राइस पे वट एवर द क्वांटिटी बायर्स वांट, राइट? कोई डाउट किसी को है तो पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। परफेक्टली इलास्टिक, यस। चलो, so this is the demand equilibrium point of industry and firm in perfect competition market, right? Now अब ये तो डिसाइड हो गया कि फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर आएगा, या मतलब फर्म इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर आएगा, एंड उस पॉइंट पर इंडस्ट्री जो है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर देगी। क्लियर है ये तो, है ना? नाउ हाउ द फर्म्स इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। हमने क्या बोला है कि फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, वेयर द फर्म गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। नाउ हाउ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड। So there are two conditions, right? There are two conditions which we have to, a firm has to satisfy. These two condition अगर firm satisfy कर रही हैं, then that point will be the equilibrium point of the firm. It means कि firm जो है हमेशा उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑपरेट करेंगी जहां पर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी, जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अभी देखते हैं वो कंडीशंस कहाँ सेटिस्फाई हो रही है। सो देयर आर, पहले तो आपको ये दो कंडीशंस बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए कि फर्म का इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस क्या है। फर्स्ट कंडीशन इज marginal revenue should be equal to marginal cost, याद रहेगा, where MR is equal to MC. Second one is marginal cost should cut MR curve from below. MC curve cut MR, intersect MR curve from below. In other words, MC must be have positive slope, यानी upward sloping. MC curve should be rising. MC should be rising when intersect MR curve. ठीक है जी। अब इसको हम फटाफट से देखते हैं। इसमें ये वाला डायग्राम हमने पीछे भी देखा था, ये इंडिविजुअल, ये मार्केट डिमांड और सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम है। एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राइस इज सेट ओपी, दिस प्राइस इज फॉलोड बाय फर्म, देयरफॉर द फर्म्स डिमांड एआर एंड एमआर कर्व्स आर हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, दीज आर द एआर एमआर एंड डिमांड कर्व। नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ एमसी, मार्जिनल कॉस्ट कर्व की शेप कैसी होती है बच्चों? You have already covered this in the last chapter. What is the shape of marginal cost curve? Anyone has idea? Marginal cost curve की shape कैसी होगी? Whether it will be downward sloping or U shape. Very good. So marginal cost curve is U shape, right? And in the form of right sign, ऐसे टिक का साइन होता है ना। चलो, तो इफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप एंड ए आर एम आर कर्व हमारे पास यहाँ पर बने हुए हैं, तो अब देखते हैं इससे कि फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। तो वी आर मेकिंग द यू शेप मार्जिनल हेलो कॉस्ट कर्व। सर।
Hello, Yes. sir. Sir, I doubt, sir, this chapter, how many marks for exam? This chapter 4 has a 15% weightage, right? Sir, and 15% weightage, that means how many questions can we expect on market chapter? Actually, the questions, number of questions are not fixed, right? So it may be vary from 15 per, matlab 1 marks each question, so you can say on an average 10 to 15 questions. है ना? And for this chapter, we in study material, do we need to see the diagrams also? Yes, yes, yes. These are questions will be asked on the basis of diagram also, right? Uh, uh, अभी मैं जैसे explain कर रहा हूँ, how I am explaining here, है ना? In the last slides you have seen, I have told you the demand and supply curve, है ना? Right and leftward shift. The questions are asked on the basis of diagram also, right? अच्छा. Yes, sir. Then the assignment will get no, sir. Today assignment and Yes, notes. yes, yes, yes. The notes I have already uploaded, and the assignment you will get after the session, right? Okay, sir. Thank you, sir. Your teaching is very nice. आप अच्छा पढ़ाते हो. Thank you, thank you, thank you so much. Nice experience, sir. Thank you, sir. Thank you. So we are going to discuss here AR and MR curve, right? तो यहाँ पर देखेंगे equilibrium point कैसे आएगा, right? So देखो, what is the condition of equilibrium where MR is equal to MC, MC must be rising, right? These two conditions you must remember every time in your mind कि whenever the questions will be asked on the basis of diagram, whenever the question will be asked on the basis of diagram, you must have these 2 points clear, and not only for the perfect competition बच्चा, perfect competition ही नहीं, but in monopoly, monopolistic, oligopoly, any kind of market, these conditions will not change. Mark my words, note it down. These conditions will not change, right? For every firm, the equilibrium, and in any market, the equilibrium where MR is equal to MC and where MC is rising, where MC is rising. राइट सो अभी टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, यहां देखते हैं फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे आएगा. तो हाउ द फर्म्स इक्विलिब्रियम इज, दिस इज द एमआर कर्व, हॉरिजॉन्टल लाइन, right? This is the MR curve. Now MC curve is U shaped. So whenever U shaped MC curve is, first MC is decreasing, downing, and then it start rising. And where this MC, अब देखो यहाँ पर first condition क्या है? What is the first condition? Where MR is equal to MC, right? Where MR is equal to MC. This is the first condition. So in case of first condition, where MR is equal to MC, this condition is attaining at 2 points. Here MR is equal to MC, and here also MR is equal to MC. Is it clear? Right? But equilibrium तो एक ही point होगा, है ना? Equilibrium means one unique point, right? So that unique point will be here, because second condition is satisfied only here where MC is rising. So equilibrium point will be this. At this equilibrium price, this quantity OM is the quantity at which firm will produce, and the OP is the price the firm will charge. Is it clear? So this is the condition we have discussed so far. अभी मैं एक बार फटाफट से रिकॉल कर देता हूं वट एवर वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर सो फार. वी हैव लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ मार्केट. यस रेशमा, राइट? सो कुछ क्वेरीज इसमें हैं, मैं भी 5 और 10 मिनट्स के टाइम में आपकी क्वेरीज भी ले रहा हूं, और उसके साथ साथ कुछ 4 और 5 MCQs मैं डिस्कस करूंगा जितना भी मैंने पढ़ा है, राइट? सो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? मीनिंग ऑफ द मार्केट, राइट? और मीनिंग ऑफ द मार्केट, और उसके साथ साथ उसके फीचर्स क्या है मार्केट के हमने पढ़ लिए. क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट ऑन डिफरेंट बेसिस वी हैव डिस्कस सो फार. एंड other than this we have already discussed the demand and supply equilibrium, and how the price is vary with the change in demand and supply, you know? And also
the perfect competitions के features क्या है, उनकी implications क्या है, and how the equilibrium of firm under perfect competition is attained where these two conditions are satisfied, right? So in next lecture we will start with the short run and long run equilibrium of perfect competition on the basis of this condition, right? But उससे पहले हाँ मैं कुछ queries यहाँ पर लूंगा. Yes, you may ask your queries. कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, मैं एक बार उनको देख लेते हैं. ओके, किसी की कोई क्वेरी है तो वो भी टाइप कर सकते हैं इसमें. तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो बेटा, कोई क्वेरी है तो. या आप जो क्वेश्चंस लिस्ट है उसमें क्वेश्चन टाइप कर सकते हो, राइट? सो अभी मैं कुछ यहाँ पर, अगर मीनवाइल आप कुछ क्वेरी देते हो तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे. मैं यहाँ पर कुछ एमसीक्यू जितना मैंने अभी पढ़ा है उसके ऊपर कर रहे हैं. इसको आप, मैं सबसे आई होप कि ऑल ऑफ यू विल आंसर, राइट? तो आप उसका आंसर दें चैट बॉक्स में और अपने आंसर अपने पास लिखें. उसके बाद जब मैं आंसर दूंगा तो उसको टैली करें कि आपको सच में समझ में आया कि कहीं पे कोई गैप तो नहीं है, राइट? जस्ट अ मिनट. See, here are some questions for today's session. See, in economics, a market is best described as. अब आप क्या करो चैट बॉक्स में अपने आंसर. Yes, Reshma. Yes, Rishi. So, see, what are the questions here? तो अपने आंसर्स आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख के देंगे, ठीक है? नहीं तो आप अपने पास ही लिख सकते हैं, फिर आप उसको टैली कर लेंगे. See, first question is, in economics, a market is best described as a fixed geographical place, a collection of buyers only, a collection of buyer and seller influencing price, a government regulated trading place. बताओ क्या ऑप्शन होना चाहिए? यस मुस्कान. सो आप टाइप कर दो उस पे चैट बॉक्स पे, व्हाट इज द राइट आंसर. चलो, मैं यहाँ पर राइट आंसर मार्क कर रहा हूँ. आप इसको चेक करें. इन इकोनॉमिक्स अ मार्केट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज a collection of buyer and seller influencing price, right? सो हमने पढ़ा है कि मार्केट जो इकोनॉमिक्स में है बेसिकली वो किससे मिलती है, बायर और सेलर से मिलके बनती है, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन, a collection of buyers and seller influencing price, right? Now second is, which statement correctly distinguish value in use from value in exchange? याद है हमने ये डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, वी हैव डिस्कस की वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. सो क्या डिफरेंस है दोनों में वो पूछ रहे हैं हम यहाँ पर. बताओ, ऑप्शंस पढ़ लो. वैल्यू इन यूज इज ऑब्जेक्टिव, वैल्यू इन एक्सचेंज इज सब्जेक्टिव, वैल्यू इन एक्सचेंज इज मार्केट डिटरमाइंड, वैल्यू इन यूज डिटरमाइंस प्राइस. विच वन इज द करेक्ट आंसर? यस, तो करेक्ट आंसर इज again C. The value in exchange is market determined, right? Where demand and supply are equate, that is the value in exchange. Now question number 3, which is a technical question, इसको देखेंगे ध्यान से.
on a straight line demand curve, if the midpoint, at the midpoint price is 60, quantity is 100, then what will be the marginal revenue at this point? अगर आपने concept अच्छे से समझा है, if you have learned the concept clearly, then you may know कि there is a straightforward answer of this question. You need not to do any calculation, है ना? यहाँ कोई calculation की जरूरत नहीं है. बताओ, if on a straight line demand curve at the midpoint price is 60, quantity is 100, what it will be the marginal revenue at this point? It will be 60 rupees, 30 rupees, 0 or minus 30. What will be the answer? थर्ड का आंसर क्या होगा बच्चों? यस, इट विल बी सी, 0. क्यों होगा 0? मैंने 3 पॉइंट्स डायरेक्टली आपको बताए थे. वेयर इज 1 एट मिड पॉइंट क्या होता है? डिमांड करके मिड पॉइंट पे क्या होता है बच्चों? डिमांड करके मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होती है. सो इफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, इट मींस these two quantities 60 and 100 rupees have no use for calculation here. ये कंफ्यूज करने के लिए ओनली, राइट? सो इसका कोई यूज नहीं है. अगर हम ध्यान से देखें तो इस 60 और 100 का कोई यूज है ही नहीं. हम सीधा सीधा देखेंगे एट द मिड पॉइंट इलास्टिसिटी इज 1, and when elasticity is 1, mr is equal to 0. So C will be the correct option. Any doubt? Chalo. Now see, the next question is, this is the case, right? ऐसे analytical questions भी आ सकते हैं. A student values his old textbook rupees 1000 emotionally, right? Because it helped him to clear CA exam. In the market, however, the book fetch only rupees 100, right? So market में जो book है उसकी value 100 rupees है, but because all these books help the student to clear his CA exam, so rupees 1000 emotionally, right? So the question is on the basis of this statement is the emotional attachment represent. So जो emotional attachment है वो इसमें से कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेदर एक्सचेंज वैल्यू, मार्केट वैल्यू, सेंटिमेंटल वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू. व्हाट विल बी द आंसर? Yes, students, what will be the answer? Fourth, C, sentimental value. All agree with that? Yes or no? Right. Yes, so it is the sentimental value. Fifth is economics is primarily concerned with. In economics, we are primarily concerned with. हम किसको मेनली कंसर्न करते हैं? वेदर सेंटिमेंटल वैल्यू, मॉरल वैल्यू, वैल्यू इन एक्सचेंज और वैल्यू इन यूज. ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको इन अ वेरी बिगनिंग. यस, वैल्यू इन एक्सचेंज, राइट? सो वैल्यू इन एक्सचेंज का दूसरा नाम क्या है? इसको हम इकोनॉमिक वैल्यू भी बोलते हैं और इसी को हम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस जो है वही है, राइट? सो वैल्यू इन एक्सचेंज. तो इन इकोनॉमिक्स प्राइमरी कंसर्न, दैट इज द वर्ड इज प्राइमरीली कंसर्न. तो प्राइमरीली कंसर्न विद द वैल्यू इन एक्सचेंज, राइट? बट yes, both value in use and exchange are both useful in economics. इकोनॉमिक्स में दोनों यूज होते हैं. वैल्यू इन यूज कहाँ यूज होता है? मैंने बताया था आपको फॉर द मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट. मैंने बताया था व्हाट अ कंज्यूमर इज willing to pay, that is marginal utility, right? So in utility concept, used value in used also value in use is also useful. But here in question the word is primarily and both option is not there, right? इसमें देखो कहीं पर both option है, नहीं है. और क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उसने बोला है primarily concerned, तो mainly concerned with value in exchange, right? So this will be the
correct answer. Now, one or two more questions. This. A competitive firm finds the market price below the average cost. This question we will cover in next class क्योंकि अभी ये टॉपिक हमने नहीं करा है. So I will move to the next slide. Right. So ये हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे. सो फिलहाल अभी जो मैंने बताया ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है. राइट. सो I can request the technical staff support staff. Can we, for the 5 minute unmute, give the permission to unmute them? They can ask their queries if they have any related to this. Or Okay, sir. Okay, sir. Done, sir. right. So one by one, students, you can ask your queries for 5 minutes more. Right. One by one, raising the hand, and you can ask your queries. Please. Yes, students. No one has any query. So I hope all of you are well aware about what I have told, what I have taught you in this lecture, and everything was clear, and the concept were clear, and you also enjoyed the session, right? So we will continue in the next session with perfect competition market, where we will discuss. We will start with the short run and long run Hello, equation. sir. Yes, Hello, sir. yes, Sir, in MCQ 6th, right. Just a minute. Yes. sir, sixth, not seventh one. Sixth and seventh one we will discuss in the next session, beta. है ना? Oh, After discussing. sorry, sir. Sir, Right. sorry. I was asking from study material MCQ. Suppose that a sole preparation in MCQ for study material 4.67th page. Can you repeat question? Can you dictate the question once? Suppose that a sole proprietorship is earning total revenues of rupees 1 lakh and is incurring explicit cost of rupees 75,000. If the owner could work for another company for rupees 30,000 in a year, we would conclude that the firm is incurring economic loss. Implicit cost are 25,000. Total economic cost are 1 lakh. Individual is earning economic profit of 25,000. Right. See, in that case, it is very clear ki, what is the total revenue, right? 1 lakh rupees is total revenue. And what is the explicit cost? Abhi question पढ़ के आप खुद बताओ, you tell me what is the explicit cost? The explicit cost what you are paying to the outsiders, right? So 1 lakh is revenue, है ना? Then explicit Yes, cost sir. is what you are paying outside, rupees. And 30,000 I think he could work for another, है ना? ये भी था ना, ये work another anywhere else for 30 or 35,000. Sir, 30,000. 30,000 is implicit cost, right? It is implicit cost as
because this is the opportunity cost of the entrepreneur. Because if I am working for myself, my own business, na, other than that, if I could work elsewhere, I could get the 30,000. So 30,000 is my implicit cost, and the other amount is other amount. Batao, Other 1 lakh amount is is revenue. 1 lakh is revenue and explicit cost is 75,000. Implicit another is 30,000 a year. Could work for another company. राइट दिस नाउ अभी देखो बिल्कुल क्लियरली मैं बताता हूँ इससे क्या क्या चीजें आप निकाल सकते हैं वट एवर यू कैन फाइंड राइट इट डाउन हेयर एंड योर आंसर विल बी ऑन स्क्रीन देखो क्या है हेयर टोटल रेवेन्यू इज 1 lakh explicit Yes, cost sir. right explicit cost is 75,000 now explicit and implicit मिला के क्या बनता है हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट राइट 75,000 Ye- plus 30,000 that is 1,05,000 is economic cost, right? And what is accounting cost, students? Accounting cost is explicit cost, that is 75,000. Now you can see here is economic loss. So your answer will be the option economic loss. Kaise? Economic cost is 1,05,000 and your total revenue is 1 lakh, right? So cost is greater than revenue. When cost is greater than revenue, it is loss. Loss of how much? Rupees 5,000. So there is a economic loss. Am I clear? Yes, sir. Right. Thank you, sir. Okay, welcome. Any other doubt from this session, बच्चों जो भी आज मैंने पढ़ाया अगर so right तो आप next session में भी क्योंकि अभी यही topic चलेगा the same topic will be continue same chapter in the next session also where we will cover the perfect competition markets short run long run equilibrium. I hope you all enjoyed it. Thank you very much. Yes Yeah. sir, yes. Thank